Septic shock is most common type of distributive shock. Septic shock usually associated with gram-negative bacteria, which leads to the infection and sepsis. Sepsis causes release of cytokines. Cytokines cause generalized vasodilation. Vasodilation lead to the peripheral pooling of blood. Second thing, gram-negative bacteria's outer membrane consists of lipopolysaccharides (LPS), which is endotoxin and cytokine. These two chemicals lead to endothelial injury. Endothelial injury leads to the activation of coagulation. Activation of coagulation ultimately causes disseminated intravascular coagulation, which is the poor prognostic factor for septic shock. This is super high yield. Complication. Complication is toxic shock syndrome. Toxic shock syndrome most commonly associated with Staph aureus. Toxic shock syndrome ultimately causes systemic inflammatory response syndrome, which lead to the multiple organ dysfunction and ultimately lead to death. Toxic shock syndrome patient present with fever, foul smelling, discharge from wound and decrease blood pressure. अब हम कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स करेंगे. लाइक हाई यील्ड पॉइंट्स में हम एक पेशेंट है अनरिकॉर्डेड बीपी के साथ आ रहा है, ब्लड प्रेशर के साथ प्लस हार्ट फेलियर. फर्स्ट लाइन ड्रग, इसको हम देंगे नॉरएपी. नॉरएपी क्यों देंगे कि नॉरएपी स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्टर है. सो सारा ब्लड हम चाहते हैं कि हार्ट में आए, तो इस वजह से सारा ब्लड फौरन हार्ट में आएगा. सेकेंड थिंग, यही पेशेंट इम्प्रूव कर जाता है, सिस्टोलिक इसका 80 पे चला जाता है. तो अब इसी पेशेंट को हमने शिफ्ट करना है, इसी पेशेंट को हमने ड्यूप्यूटामीन पे चले जाना है. ड्यूप्यूटामीन एक तो आइनोट्रोपिक है, सेकेंड थिंग ये वेजोकंस्ट्रिक्टर भी कराता है. आइनोट्रोपिक इंक्रीज हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कराएगा. तो ये वाली चीज़ें ड्यूप्यूटामीन पे चले जाएंगे. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि पास्ट एमसीक्यूज़ थे जो कि एफसीपीएस में आए हुए थे. एमसीक्यूज़ में दो ऑप्शन हो, एक जगह पे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक. मोस्ट कॉमन टाइप शॉक में अगर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप. ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक ना हो तो उसके बाद हमने दूसरी जो ऑप्शन लगानी है,
अगर ये ऑप्शन नहीं तो फिर हमने हाइपोवोलेमिक शॉक लगाना है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक ना हो, हाइपोवोलेमिक शॉक।